Hi everybody, good evening. Just confirm me if at all I am audible and visible by typing Y in the chat box. Thanks for the confirmation, guys. So how many of you exams are going on? If exams are going on, type me in the chat box. Type me in the chat box. Okay, just a second. Okay, we have, okay, for some people it is starting on 18. Okay, cool guys. Sure. There might be exams, there might be some other commitments, but one thing I want to say all of you, ensure your preparation is in swing. You are always in touch with this preparation. Okay, whatever the exam you are trying to crack for, the process of cracking that exam is as same as fitness journey. Okay, you have to be consistent, only then you will get the result. Okay, so every small thing matters, and I appreciate those people who came to attend this session in spite of your exam. Okay, I'll try to add some value in this class for you all, with which you can do better in the preparation for whatever you're preparing for. Okay, and also I've taken one of the very important topics. It's a topic from the number system, right? If there is one topic that enhances your logical thinking capacity a lot, that would be number system. And especially if there is one chapter that will uh, get you acquainted, with the numbers, it is number system. If there is any on this class is especially for those people who get scared by looking at the numbers, right? And before I start anything, I'm gonna write some very important things, because I see many of the students do not know those things, but it is expected from each and every one of you. You remember them, right? So I'm gonna write them. All of you, please note them and ensure you remember them. Whatever may be the exam that you are targeting for, whatever may be the exam that you are targeting for, there are some things that you need to remember by heart. Okay, coming to the aptitude part. Okay, the first thing is, I'm writing very important things to remember. Very important things to remember for any exam that you are going to write. Some of you might have already remembering it, but even then I'll try to put them. Okay, what you will do, whatever the things I'm expecting you to remember, note them down in a single paper. Right, okay, note them down in a single paper and ensure you stick that paper in any of the places where you often see. Unless and until you know that, I mean, you can't solve the questions faster. Okay, and also most of the times when you look at a questions, in the questions itself you see these numbers. Okay, so just note down the list. The first thing is tables up to 20, right? Very important. Tables up to 20, right? 20 nines are, matlab 19 nines are 171, you should know. 18 sevens are 136, you should know. 14 eights are 112, you should know. 17 sevens are 119, you should know.
All of them should be in fingertips. You cannot wait even a second to say them. ठीक है, one table से लेके 20 table तक at any cost you need to know on your fingertips. I'm telling you, you can't take even a fraction of second to answer them. You have to by heart them at any cost. I'm telling you, just remembering these small things will have a huge impact in your score. Okay, so tables up to 20. The next thing is squares up to 25. Squares up to 25. ठीक है, 1 स्क्वायर से लेके 25 स्क्वायर्स तक आपको पता होना है, राइट? जैसे कि 1 स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर कितना होता है, सो ऑन अप टू 25 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना है। जब तक आपको स्क्वायर्स नहीं पता होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का सम्स यू कांट डू फास्टर। जब तक आपको स्क्वायर्स नहीं पता होता है, यू कांट सॉल्व अलजेब्रा क्वेश्चंस इजियर। जब तक आपको स्क्वायर्स अच्छे से समझ में नहीं आता है, you can't actually understand the geometry triplets easier. आपको स्क्वायर्स आना ही चाहिए, you can't afford to miss them. No, yes, you can attend from here only. So squares up to 25, and the next thing is cubes up to 13. मतलब 1 क्यूब क्या होता है, 2 क्यूब क्या होता है, 3 क्यूब क्या होता है, सो ऑन अप टू 13 क्यूब तक क्या होता है। मतलब if I ask you what is 7 cube, without any second thought 343 आना चाहिए मुंह से। If I ask you what is 11 cube, without any second thought 1331 आना चाहिए। 13 cube 2197 आना चाहिए। 12 cube 1728 आना चाहिए। अरे ऑन द फ्लाई आना चाहिए। समझो समझो मेरी बात, ठीक है? दिस टेक्स वेरी स्मॉल एफर्ट फ्रॉम यू, but you have to keep on remembering them every 3 days once, every 5 days once. If you do it for 2-3 months, they will be with you. बट एक वो पेपर को किसी को दे दो, जो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इन सबके आंसर एक पेपर में लिख लो, किसी को दे दो, उनको पूछो कि आपको पूछने के लिए, उनको पूछो कि पूछो मुझे जो भी क्वेश्चन इसमें, मतलब 7 क्यूब क्या है पूछो, 11 क्यूब क्या है पूछो, यू शुड बी एबल टू से, 19 स्क्वायर क्या है पूछो, यू शुड बी एबल टू से द आंसर। सो ये सारे लिख के उनको दे दो, आपकी फ्रेंड को या आपकी मम्मा को, आपकी बहन भाई को, किसी को भी, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज powers of 2. Powers of 2 up to 12. Powers of 2 up to 12. ठीक है, ये जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ, ये कॉमेडी के लिए नहीं लिख रहा हूँ, जबरदस्ती के लिए नहीं लिख रहा हूँ मैं। आप जो भी एग्जाम देने वाले हो, जो भी एग्जाम देने वाले हो एप्टीट्यूड के हिसाब से, ये सारे चीजें आपको नहीं पता हो तो आई एम टेलिंग यू, यू डोंट गेट द एलिजिबिलिटी टू गिव द एग्जाम। Eligibility is not in clearing your basic education. The eligibility is to know these things, because there is nobody who can crack an aptitude exam without knowing these things. So it is necessary that you know all these things. Powers of 2 up to 12, that means you should know what is 2 power 1, what is 2 power 2, what is 2 power 3, what is 2 power 4, so on up to 2 power 12, right? 2 power 12 is 2 power 10 is 1024, 2 power 11 is 2048, 2 power 12 is 4096. The moment you look at 4096 in any question, आपको ये strike immediately होना है कि it is 2 power 12. It is that important, right? Similarly, you have powers of 3 up to 6. That means you need to know what is 3 power 1, what is 3 power 2, what is 3 power 3, what is 3 power 4, what is 3 power 5, what is 3 power 6. राइट, ये सारे आपको पता होना है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज 729, you don't know, sir. You can't say, sir, what is 729? I don't know what is 729. You should realize that 729 is 3 power 6, or also you should say it is 9 cube, right? 729 को देख के आपको समझ में आना है ये 9 क्यूब हो सकता है या तो 729 हो सकता है। ये कितनी टॉपिक्स में आपको काम आएगा मैं नहीं बोल सकता हूँ,
It will help you in almost all the chapters in number system. It will help you a lot in logarithm. It will help you a lot in geometry also, right? You need to understand whether the number is a perfect square or a perfect cube. You need to understand that, right? Unless and until you know these things, you can't understand that, right? And similarly, you need to know powers of 5 up to powers of 5 up to 4. 4 would be enough. Even if you know up to 6, it will be great. 5 square 25, 5 cube 125, 5 power 4 625, 5 power 5 1325, and then 5 power 6 you will go for 15625, right? You need to know 5 power 1 से लेके 5 power 6 तक every value, ठीक है? 5 25 125 625 3125 and then 15625 डॉट पता होना है by heart, ठीक है? Coming to powers of 7, powers of 7 up to 4 तो होना चाहिए, powers of 7 up to 4 तो होना चाहिए. 7 square 49 पता है, 7 cube 343 पता होता है from the cubes. 7 power 4 2401 होता है, वो भी पता होना है. 7 power 4 क्या होता है 2401, वो भी आपको पता होना है. मैं इसका आंसर्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आंसर्स आपको खुद आ जाता है कैलकुलेटर में, पहचानना कितना मुश्किल नहीं है, बट लेकिन वो याद होना है. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. Powers of 7 up to 4, 7 power 1, 7 power 2, 7 power 3, 7 power 4. Then powers of 8 up to 3 पे up to 3 पता हो तो भी ठीक है, ठीक है? Even if you want to find out a 8 power 4, you can do 8 square is 64, 64 into 64 करना पड़ेगा आपको, बट 8 का क्यूब ऑलरेडी आपको पता है. यहाँ क्यूब्स में मैंने बोला 8 के लिए उतना जरूरत नहीं है, बट लेकिन you can know about powers of 9 up to 4. 9 square is 81, 9 cube is 729, 9 power 4 is 6561 आपको पता होना है, ठीक है? ऑन द फ्लाई पता होना है. मैं बोल रहा हूँ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ अभी. पार्टिसिपेंट्स में मुझे पता है कौन कौन ये अटेंड कर रहा है, राइट? मैं अगली बार क्लास में पूछूंगा, अगली बार क्लास में आपको पूछूंगा, ठीक है? मैं यहाँ जो भी लिखा हूँ वो क्लास में आप बोलना है. जो भी लिखा हूँ आप क्लास में बोलना ही है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मैं बोल रहा हूँ इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, because there are a lot of things that these things will cover. Okay, Neil, don't worry. When I come to online class, I'll ask what's there. Okay, powers of 9 up to 4, 9 power 1, 9 square, 9 cube, 9 power 4. Powers of 10 तो जरूरत नहीं है. And again, powers of 11 up to 4 आपको पता होगा. 11 power 1, 11 11 power 2 121, 11 power 3 1331, 11 power 4 14641. ठीक है? Yeah, Saurav Sharma, it will be in Zoom only. It will also be live, but you can attend in Zoom. Powers of 11 up to 4, 11 power 1, 11 power 2, 11 power 3, 11 power 4. Right? So ये सारे चीजें जब तक आप याद नहीं रखोगे, श्योर निकिता, if I get it, I'll accept it. Okay? ये सारे चीजें जब याद रखोगे तभी आपको एलिजिबिलिटी आता है, ठीक है? ये सारे चीज जब याद रखोगे तभी एलिजिबिलिटी आता है. प्लीज नोट देम डाउन इन योर नोटबुक राइट नाउ. एंड अगली क्लास में मैं ये सारे का आंसर्स देखना चाहता हूँ. मतलब 1 स्क्वायर से लेकर 25 स्क्वायर तक आप लिखना चाहिए. 2 पावर 1 से 2 पावर 12 तक आपको लिखना चाहिए. पावर्स ऑफ 3 अप टू 6 आपको लिखना चाहिए. उसमें से कोई भी कभी भी पूछूं मैं, आपको आंसर देना पड़ेगा, राइट? इन केस यू आर confronting me in the center, if at all I come across you in the center, I'll stop you then and there and I'll ask you what is 7 power 4. You should say 2401. That's how we greet each other. ठीक है?
Take these things as mandatory. If you are done noting them, type D in the chat box. I'll go to the next slide where we'll discuss the basic part of and the part of how to find HCF and LCM easily. Manisha, no. It varies according to your batch. Okay. Cool. So now let's discuss about this thing, which is HCF and LCM, right? I expect each and every one of you to know what is factor and what is multiple, right? Initial sum part, it might be as same as what I have taught in many of the classes, but post which I'll ensure only on how to find the HCF LCM faster, because most of the questions, be it arithmetic or be it geometry or be it data interpretation, be it algebra where you have fractions, you are expected to take the LCM faster. You're expected to take the LCM faster. You need to understand the concept of factors faster. Okay. So and that's the reason I'm taking up this chapter. Right. So first of all, you need to know the difference between a factor and multiple. For example, if I say there is a number 6, there is a number 6. इनका factors क्या होता है? 1, 2, 3, 6 will become the factors. Right? What is a factor? A factor is a number which can divide the given number completely. 6 को divide करने वाले numbers क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है. ठीक है? And multiple क्या होता है? जो नंबर 6 से डिविजिबल हो सकता है, जैसे कि 6, 12, 18, 24 and so on. Right? Factors are finite whereas multiples are infinite. Right? These are all called as factors because these are divisible by 6. These are all called as multiples as these are divisible by 6. Okay. So whenever there are two numbers, उन दोनों का factors भी होता है, उन दोनों का multiples भी होता है. Right? So today we will be interested in the common factors or common multiples. Okay. So now, first of all, if I talk about HCF, right? And I take two numbers which are 12 and 15. 12 का factors क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Right? Simple. And 15 का factors क्या होता है? 1, 3, 5, 15. Cool, yes. Right? These are all the factors of 15. Now, if I ask you what are the common factors in them? What are the common factors in them? How do we find that? We just look at what are the common 1, 3. Those are the common factors. Cool, Chauhan, full Akash. Now, if I ask you what is the highest common factor? मतलब इन common factor में से highest वाला है 3. Okay. So इनमें से highest वाला है 3. So that's why I take the highest common factor as 3. But there is one more method of finding the HCF, which is using prime factorization method. Right? So 12 है, पहले इसका prime factorization करना पड़ेगा. Prime factorization का meaning क्या होता है? The ability of the process of writing the numbers into product of only prime numbers. So 12 को मैं सिर्फ prime number से divide करके देखता हूँ. 2 6 2 3 right? उसके बाद 3 1 If I multiply everything, 12 is nothing but 2 square into 3. Right? Similarly for 15, 2 नहीं जाता है तो 3 से लेता हूँ. 3 5 5 1 Therefore 15 is nothing but 3 into 5. Now I am looking for the common factor. I need to write only common numbers which are in both 12 and 15. What are the common numbers in both 12 and 15? HCF will be
3. Here दोनों में कॉमन है प्राइम फैक्टर 3. नाउ दोनों में पावर 1 1 है, so I have taken here power as 1. What happens if I had 3 power 2 here and 3 power 3 here? What will be the HCF? What will be the HCF? In case I had 2 power 3, 3 power 2 and 3 power 3. Yes. First we will write the common factors which are prime factors which is 3, and then we will write power में जो भी minimum है 2 और 3 में 2 लेते हैं क्योंकि 3 square is common in both but 3 cube is not common in both. But in the given question we have only 3 which is common in both, right? Now I'll give you a question, try to solve this. Find the HCF of A comma B if A is equal to 2 power 7 into 3 power 11 into 5 power 2. B is equal to 2 cube into 3 power 4 into or 3 power 15 into 7 power 11. Who will tell me the answer फटाफट? इसका HCF क्या होता है? नो जुबेर. गुड सृष्टि. शिबा. नो संचेती. पूर्णितम. सो गाइस इसमें क्या होता है? ओके हिनल, देखो देखो इसमें क्या होता है, पहले पहले जब भी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पहचानने के लिए कोशिश करते हो, ठीक है, you need to look at what are the prime factors which are common in both. What are the prime factors which are common in both? 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, दोनों कॉमन है. या यस यू आर राइट, दोनों कॉमन है. नाउ बेस तो फिक्स कर दिया हमने, अब पावर का देखना पड़ेगा. 7 और 3 में कम क्या है? 7 और 3 में कम वाले क्या है? 3, तो वो लेना पड़ेगा. 11 और 15 में क्या होता है कम? वो लेना पड़ेगा. नाउ इनके अलावा कोई प्राइम फैक्टर्स कॉमन नहीं है, सो द आंसर वुड बी 2 cube into 3 power 11, right? And most of you are right. Now I'll give you one more question. All of you try to answer that. Find the HCF of A comma B if A is equal to 2 power 8 into 12 power 7 into 5 power 3. B is equal to 2 power 3 into 15 power 8 into 7 power 11. Let me see who will tell me the answer. दीप नहीं है, वेदिका नहीं है, श्रुति नहीं है, सृष्टि नहीं है, फिर नहीं है, नाव्या नहीं है, जुबेर नहीं है, हिनल नहीं है. Whoever is saying 2 cube as the answer, उनका आंसर गलत है. या वेदिका एग्जैक्टली. कुल राहिल. या कुल रिदम. कुल सृष्टि. कुछ तो मिसिंग है सृष्टि, लेकिन नो दीप. एवरीबडी आई नीड योर अटेंशन हियर. आई नीड योर अटेंशन. अच्छे से देखो.
अच्छे से देखो। कूल वंशिता, परफेक्ट। नो यश। यहाँ पहले क्वेश्चन में जब मैंने किया है 2 3 5, ठीक है, इसमें इसमें 2 3 5 जो बेसिस है दे आर ऑल प्राइम। इसमें भी 2 3 7 वो भी प्राइम है। लेकिन यहाँ 2 12 5 में 12 प्राइम नहीं है। 2 15 7 में 15 प्राइम नहीं है। मतलब यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन अनलेस एंड अनटिल यू प्राइम फैक्टराइज दिस फर्स्ट। पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब बेस में हमेशा प्राइम ही होना है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? बेस बेस कंटेन्स ओनली प्राइम नंबर। ठीक है, दैट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद ही आप एचसीएफ या एलसीएम कर सकते हो। अब देखो इसका क्या करना है। a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 power 8 मल्टीप्लाइड बाई 12 को मैं क्या करना है? पहले 12 को मैं स्प्लिट करना है। आई कैन राइट इट एज 2 into 2 into 3 power 7 multiplied by 5. I am writing it only as a product of prime factors if you clearly observe. 2 into 6 आता है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 को वापस 2 into 3 लिखा, 5 power 3, and it will become 2 power 8 into 2 into 3 whole power 7 is nothing but 2 power 7 into 2 power 7 into 3 power 7, and then you have 5 cube, right? अब क्या, 2 की पावर 8 भी है, 2 की पावर 7 भी है, 2 की पावर 7 भी है। इन तीनों का बेस सेम है, राइट? एज वी ऑल नो दैट ए पावर ए बी आई मीन ए बी होल पावर एम, ए बी होल पावर एम इज इक्वल टू, जब भी ऐसा होता है इट विल बी ए पावर एम इंटू बी पावर एम। सिमिलरली ए पावर एम इंटू बी पावर एम हो तो, सॉरी, ए पावर एम इंटू ए पावर एन हो तो ए पावर एम प्लस एन करते हैं हम। इंडाइसेस से ये आता है हमको, राइट? नाउ यहाँ क्या होता है? 2 power 8 प्लस 7 प्लस 7, क्योंकि तीनों का बेस सेम है तो पावर गेट्स एडेड। 2 को 8 बार मल्टीप्लाई किया, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई किया, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई किया, इनडायरेक्टली 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 7 22 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 power 7 5 power 3। सो 2 का पावर क्या होता है? 15 प्लस 7 22 इंटू 3 power 7 इंटू 5 power 3। अब बेसिस में only prime numbers है, so now I can say that I have prime factorized the first one. Now similarly I have b with me. What is b? 2 cube into 15 power 8 into 7 power 11. Only this 15 power 8 has to be considered. 2 power 3, 3 into 5 whole power 8 into 7 power 11. 2 cube into 3 power 8 into 5 power 8 into 7 power 11. Right? All are prime factors. राइट? बी का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ए का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखना है मुझे, यहाँ 2 power 22 है, 2 power 3 है, मतलब बेसिस में कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर 2 1 3। यहाँ 2 का पावर 22 है, 2 का पावर 3 है, सो मिनिमम है 3। यहाँ 3 का पावर 8 है, 3 का पावर 7 है, so minimum is 7, 8 and 7 में, so this will be my HCF. This will be my HCF. Vishaka, you're right. Everybody, if you understood this, type Y in the chat box. ए सॉरी 5 ही है ना दोनों में, सॉरी 5 ही है दोनों में, 5 ही है दोनों में, 5 ही है दोनों में, कॉमन फैक्टर्स में। वो 5 है या 5 power 8, ओके 5 ही है, यहाँ 7 power 11 तो बच गए, बट 5 ही है, 5 ही है, 5 ही है।
सो 235 235 5 ही है, या 5 का पावर 8 है, या 5 का पावर 3 है। सो दोनों में दो जो कम है वो है। सो दिस विल बी माई आंसर। Cool. Everybody, if you understood this now, type Y in the chat box. Cool, guys. Now और एक क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट कर दो ना। ठीक है, फाइंड द HCF of A comma B comma C. A is equal to 6 power 8 into 6 power 8 into 28 power 14. B is equal to 10 power 11 into 15 power 17. C is equal to 26 power 17 multiplied by 21 power 18. Let me see who will tell me the answer. Shravani, no Gaurav, cool Ania. Cool Vanchita. Everybody, time up. तो हम करेंगे क्या? 6 is nothing but 2 into 3, right? You will write it as 2 into 3 whole power 8. Vedika, no. You have some more. Cool Latika. No Krisha. See you. 2 into 3 whole power 8. And 28 क्या होता है? 7 into 2 into 2 whole power 14. Right? Right? Now I can write this as 2 का पावर 8 होता है, 2 का पावर 8 होता है, यहाँ 14, यहाँ भी 14, 2 का पावर इतना होता है, 3 का पावर 8, 7 का पावर 14. So which implies 28 plus 8, 36. So 2 का पावर 36 into 3 का पावर 8 into 7 का पावर 14. That is what is up A. How about B? B में 2 power 11, 5 power 11, यहाँ 5 into 3 है ना ये, 5 power 17, 3 power 17. So which will be 2 की पावर 11. ओके, 2 की पावर 11 तो 2 की पावर 11 है, 5 की पावर तो 28 होगा, 3 की पावर तो 17 होगा, राइट? इसका क्या है? सी का 26 is nothing but, let's check Sehaj. Yes, let's check. 2 into 13 whole power 17, 3 into 7 whole power 18. यहाँ 2 का पावर 17 है, 3 का पावर 17 है, 3 का पावर 18 है, 7 का पावर 18 है.
हियर 2 का पावर तो 17 ही रहेगा, 3 का पावर 17 प्लस 18 35 रहेगा, 7 पावर 18 बचेगा. So here I have three numbers. This is one number, this is another number, and this is another number. तीनों में कॉमन होने वाले प्राइम फैक्टर क्या है? बेसिस है, 235 है, 237 है, 237 है, राइट. बट लेकिन जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हो वो तीनों में कॉमन होना है, तीनों में कॉमन होना है. जब तीनों में कॉमन होना है, मेरा आंसर क्या बनेगा? मेरा आंसर क्या बनेगा? 2 इंटू 3 इंटू 5. नहीं, 2 है कॉमन, 3, 2 तीनों में कॉमन है, 3 भी तीनों में कॉमन है, 5 सिर्फ फर्स्ट वन और थर्ड वन में कॉमन है. नहीं, सिर्फ फर्स्ट वन में. 7 बाकी दोनों में कॉमन है. बट लेकिन वी हैव टू कंसीडर ओनली दोस नंबर्स व्हिच आर कॉमन इन ऑल द थ्री. 2 का पावर यहाँ 17 है, यहाँ 36 है, यहाँ 11 है, सबसे कम 11 होगा. 3 का पावर यहाँ 17 है, यहाँ 8 है, यहाँ 35, सबसे कम 8 होगा. सो मेरा आंसर बनेगा 2 पावर 11 इंटू 3 पावर 8. Unless and until you know how to make the number into prime factorized form, you cannot understand or make how to find the HCF. Everybody, if you understood this, type Y in the chat box. Perfect. श्रुति, कुछ नहीं है यहाँ. 28 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, उनको प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में लिख लिया मैंने. उसके बाद सारे बेसिस को कॉमन कर दिया. 2 का पावर 14, 2 का पावर 14, 2 का पावर 8, सो 14 प्लस 14 प्लस 8 आ गया, राइट. सी पार्ट कुछ नहीं है. 26 इज नथिंग बट 2 इंटू 13, 21 इज नथिंग बट 3 इंटू 7, सो 2 पावर 17 आ गए. 13 पावर 17. ओ, ये 13 पावर 17 है ना. Oh, that is 13 power 17. Though the answer is right, my C part is wrong. Yep. This is 13 power 17. We have what? So 13 power 2, 13, 3, 7. All are different. So this is the third number. Right? 2, 3, 2, 3. Because these are the only things which are common. So 2 का सबसे कम 11, 36, 17 में 11 है. 3 का सबसे कम 17, 18, 8 में 8 है. Why do we consider the smallest power in the answer? That's what I told you, no, Sanjana. For example, let me take 8. 8 क्या होता है? 2 क्यूब. And let me take 4. 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर, राइट. 8 का फैक्टर्स क्या होता है? 1, 2, 4, 8. 4 का फैक्टर्स क्या होता है? 1, 2, 4. नाउ इन दोनों में कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट वाला कौन सा है? 4. अब देखो, 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में कॉमन क्या है? 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में कॉमन क्या है? बेस तो 2 डेफिनेटली कॉमन है. If I take smaller power, only that will be available in both. If I take 2 cube, that will be available in this, but it will not be available in this. And that's the reason I take only the smaller power. Is that clear, Sanjana? Okay, this is about finding the HCF based on prime factorization method. Suppose I want to go for HCF using another method. There is something called as division method. There is something called as division method. ठीक है. Suppose I say HCF of let me take 40
and let me take 126. ठीक है, these are the two numbers. ठीक है, so generally we can go with prime factorization method also. Suppose I want to do prime factorization method. 40 is nothing but 2 into 20, 2 into 2 into 20, 2 cube into 5. 8 5 are 40. And 126 is nothing but 2 into 63. 2 into this is divisible by 3. 3 into 21. Or 2 into 3 into 3 into 7. Right? 2 into 3 square into 7. Right? I could prime factorize it where every base is 7. Now I can apply HCF concept and then take whichever is common in both of them. यहाँ 2 5 bases है, यहाँ 2 3 7 base है, but only 2 is common in both of them. And यहाँ power 1 है, यहाँ power 3 है, दोनों में कम वाला power क्या है? 1. So HCF would be 1. This is prime factorization method which you just learnt. But लेकिन there is another way. There is another way how you can find the HCF using division method. Right? What is this division method? And there are numbers which you can deal with. When you have numbers, then you can deal with the division method instead of the prime factorized form. Just in the previous case, we cannot do prime factorization method in this. We have to do we cannot do division method in this. Prime factorized method ही करना है, but लेकिन अभी इसमें हमको numbers दिया हुआ है, prime factorized form नहीं दिया है. So we can go for the division method. What is the division method? 40 है, 126 है. इसमें छोटा नंबर को यूज करके बड़ा नंबर को डिवाइड करना है. क्या आता है? 41 जा 40, 42 जा 80, 43 जा 120. 43 जा 120 लिख लिया. रिमाइंडर तो 6 आता है. रिमाइंडर 0 आया नहीं. जब तक 0 आएगा तब तक करना पड़ेगा. जब तक 0 आया तब तक करना पड़ेगा. राइट? अभी 6 आया मेरे पास. सो वापस क्या करना है? वी हैव टू टेक द प्रीवियस डिवाइजर्स एंड देन डिवाइड इट अगेन. 40 यहाँ रख दो. 6 6 जा 36. रिमाइंडर कितना है? 4. 4 आया. रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, तो वापस द प्रीवियस डिवाइजर लेके यहाँ 6 रख के 4 1 जा 4. रिमाइंडर कितना आता है? 2. रिमाइंडर 0 आया नहीं. 0 आने तक करना पड़ेगा. वापस प्रीवियस डिवाइजर विच इज 4 लेंगे. 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4. Remainder 0. So when the remainder comes as 0, that's when the last divisor will become the HCF for 40 and 120. Everybody, if you understood this, type Y in the chat box. Okay? Cool. Now, once you know this, try to find the answer for this question. HCF of 24, 132. No, Rahil. Cool, Vanchita. Cool, Saurabh. Cool, Hinal. Cool, Latika. Cool, Shravani. Cool, Sehaj. Sehaj, no. Cool, Nikita. No, Shushti. No, Deep. दीप HCF एक ही नंबर होता है. सुरेश, I didn't understand your answer. No Yash. Yes Sheba. No Shushti. No Rahul. Full Vishaka. Yes Lakshmiya. Perfect.
No, Yash, no. How is 10 factor of 24, Yash? 2 or 3 to 3 power 1. Okay, you are doing using the prime factorization method. If there are numbers, try to go with the division method. Try to go with the division method. ठीक है, मैं क्या करता हूँ 24 लेता हूँ, 24 लेके 132 को डिवाइड करता हूँ। यश कुछ गड़बड़ किया आपने, देखो राहिल आप सब सही है, श्रुति नो। 24 का टेबल क्या होता है? 24 1 द 24, 24 2 द 48, 24 3 द 72, 24 4 द 96, 24 5 द 120। ठीक है, वन मोर थिंग, 24 काफी बार आता है आपकी नंबर्स में, तो यहाँ लिख लो वो भी। ओके, टेबल ऑफ 24 अप टू 5, मतलब आपको पता होना है 24 इंटू 1 क्या होता है, आपको पता होना है 24 इंटू 2 क्या होता है, राइट? एनी आई मीन 20s में जो भी नंबर है अप टू 5 तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 23 इंटू 3 किया तो 20 प्लस 3 इंटू 3 69 आप बोलना चाहिए, 48। 24 into 3 is 72. 24 into 4 is 96. 24 into 5 is 120. And 24 into 6 is 144, which is actually 12 square. ठीक है, you have to play with these numbers. ठीक है, cool Vanisha, now you are right. 24 5 जा कितना? 24 5 जा 120. रिमाइंडर 12 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तब तक करना पड़ेगा। तो द प्रीवियस डिवाइजर वाज 24, 12 2 जा 24, रिमाइंडर 0। So फटाफट आ जाता है कि फटाफट you are using the numbers full ashu instead of going with prime factorization method. ठीक है, now let me give you one more question. HCF of 36, 54 and 126. Try this. Very good, Navya. No Anshita. No Anushree. Full Rahil. Full Saurav. Full Akash. No Latika. Full Hinal. No Naman. Full Anjali. No Chauhan. Full Shravani. No Yash. No Deep. Full Nikita. Full Sahaj. No Jubair. ठीक है guys. ठीक है, your time up, your time up, your time up. See here, यहाँ क्या करना है? See, you could have done it using the prime factorization method. I don't have any issue. Or you could have done using the table method. I don't have any issue. In case prime factorization method कर रहे हो तो 36 is nothing but 4 into 9, which is 2 square into 3 square. 54 is nothing but what? 2 into 27, right? 27 is 3 cube. 2 into 3 cube, right? 126 क्या होता है? 2 into 63,
2 into 7 into 9, which is nothing but 2 into 3 square into 7, right? If at all you want to find out the HCF, तीनों में कॉमन होने वाले प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 3 2 3 2 3 2 3 तो प्राइम फैक्टर कॉमन है। अभी यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, सबसे मिनिमम 1 है, वो लेना पड़ेगा। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, सबसे मिनिमम 2 है। सो आंसर क्या होता है? 2 into 9 18. So this is what using the prime factorization method, which I don't recommend you people to go for. But if at all I am going for table method or this division method, what do I do first? 36 लूंगा, 54 को करूंगा, 36 2 जा 72 हो जाएगा। So 36 1 जा 36, so कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। वापस 36 ले लो, 18 2 जा 36, रिमाइंडर 0, right? The previous divisor will take, रिमाइंडर 0 आ गया। 18 is the HCF, 18 is the HCF। वापस इस 18 को 126 से करना पड़ेगा। कितना आता है? 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 120। इन दोनों का HCF जो भी आया है उसको थर्ड नंबर के साथ करना पड़ेगा। इन दोनों का HCF जो भी आता है विच इज 18, वो अभी वापस इन दोनों का HCF हमको करना पड़ेगा जब 3 नंबर से है। 18 7 जा 126 0। अनलेस एंड अनटिल आपको 18 का टेबल आता है, ये फटाफट कैसे होता है, ठीक है? सो एग्जाम में तो क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होता है सीधा फाइंड द HCF ऑफ 36 54 एंड 126। वो बोलता है कि 36 बुक्स है मैथ्स का, 54 बुक्स है केमिस्ट्री का, 126 बुक्स है बायोलॉजी का। इनको आपको अरेंज करना है इक्वल रोज, आई मीन नंबर सर्टेन रोज में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स होना है, इक्वल नंबर ऑफ बुक्स होना है हर रो में, एंड सेम सब्जेक्ट का होना है। देन दे विल मेक ऑल द कंडीशन सो दैट यू विल कम अप विद HCF, राइट? HCF 18 आया तो 18 सही है। सो अभी 18 और 126 का HCF कितना है? 18, राइट? सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग डिवीजन मेथड विथ यू, ठीक है? And I'll give you more faster method. I'll give you more faster method when there are 3 numbers for you. Okay? For example, I have 36, I have 54, I have 126. I have 126. Okay? The fastest method. Look here, everybody. उसके लिए नॉर्मल कैसे में करूंगा जुबेर मैं, ठीक है? सो द फास्टेस्ट वे इज 36 है 54 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 36 और 54 का डिफरेंस कितना है? 18। 54 एंड 126 का डिफरेंस कितना है? 54 एंड 126 का डिफरेंस कितना है? 72। डिफरेंस इज 72, राइट? हम ऐसे 2 बार नहीं करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका कर सकते हैं। 18 72, 18 4 जा 72, रिमाइंडर 0 आ गए तो HCF is equal to 18. It's not necessary we have to find out for 36 and 54 first and then 126. And then HCF of those two and 126. सीधा we can find out the difference and then find the answer. Everybody, if you understood this, type Y in the chat box. Every time ऐसा ही होगा आशु।
ठीक है. Suppose I ask you to find out the HCF of HCF of 30, 75, 180. Yeah, Saurav. Cool, Naman. Cool, Shravani. Cool, Jubair. Cool, Saurav. Cool, Vishaka. Cool, guys. Very simple. Now it becomes more easy. Right? So what do? पहले 30 है, 75 है, 180 है. इन दोनों का डिफरेंस होगा 45. इन दोनों का डिफरेंस होगा 105. Now I need to find out the HCF of 45 and 105. I'll simply do 45 और 105 का LCM क्या होगा, HCF क्या होता है. 45 2 जा 90, 15 आएगा. 45 यहाँ ले लो, 15 3 जा 45, remainder 0. So the last divisor is 15. So that will become the HCF. We need not find the HCF of these two first and then the HCF of that with the 180. Instead, differences का कर सकते हैं. Everybody, if you understood this, type Y in the chat box. Vanisha. I hope this is clear. Thanks for the confirmation, guys. Lovely. ठीक है. Now, let me ask you all a question. Okay. A number when divided by 32 gives a remainder 3, and when divided by 80 gives a remainder 3, and when divided by 96 gives a remainder 3. ठीक है. The question is find the smallest such number. Try this.
नो चौहान, नो वेदिका, नो हर्ष, नो अंशिता, नो सहज. Guys, whoever is telling the answer, just try to verify that. उस नंबर को 32 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आना चाहिए, 80 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आना चाहिए, 96 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 3 ही आना चाहिए. जुबेर, 7 को 32 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आता है क्या? कुल नाव्या, कुल आकाश, नो हिनल. हिनल, उसको 32 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आता है क्या? यस. वो पहचानने के लिए कौन पूछा? वही बोलने वाला हूँ, देखो. यश, एवरीबॉडी, आई नीड योर अटेंशन. ठीक है. दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन requires you to think differently. We have been given a situation. Everybody, I need your attention. मुझे एक बात बोलो और मुझे एक एग्जांपल दो ऐसा. इफ आई एम डिवाइडिंग बाय 5, मुझे रिमाइंडर 2 आना चाहिए. 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आना चाहिए, वैसे एग्जांपल्स दो मुझे. ओके, आई गॉट वन एग्जांपल एज 12, another example as 7, another example as 17, cool Vedika, another example as 22, another example as 27, another example as 32. Good. Another example will be 37. Nice. If you clearly observe, 7 is what? 5 plus 2. 12 is what? 5 into 2 plus 2. 17 is what? 5 into 3 plus 2. 22 is what? 5 into 4 plus 2. Right? 27 is what? 5 into 5 plus 2. 32 is what? 5 into 6 plus 2. Similarly, 37 is 5 into 7 plus 2. Right? मतलब 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आना चाहिए. मतलब मेरा नंबर मस्ट बी ऑफ द फॉर्मेट 5 into समथिंग प्लस 2. एक्स में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, बट लेकिन उस नंबर को मैं 5 से डिवाइड किया तो ए नंबर रिमाइंडर 0 देता है, 2 बचता है रिमाइंडर कोई भी नंबर में. एवरीबॉडी, इफ यू अंडरस्टूड दिस, टाइप वाई इन द चैट बॉक्स. ठीक है. श्रुति, विच पार्ट यू डिडंट अंडरस्टैंड? 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आना चाहिए. 5 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आना चाहिए, है ना? मतलब वो नंबर 7 हो सकता है क्योंकि 5 से डिवाइड किया तो 2 आता है रिमाइंडर. 12 को 5 से डिवाइड करने से 2 आता है रिमाइंडर. मतलब 7 इज बेसिकली 5 into 1 plus 2. 12 इज नथिंग बट 5 into 2 plus 2. ये क्या है? 5 into 3 15 plus 2. ये क्या है? 5 into 4 20 plus 2. So all these numbers will give me remainder 2. मतलब कोई भी number if you look at, that will be always of the format 5 into some integer plus 2. ठीक है. Now if I ask you, there is a number which when divided by 7 gives the remainder. मतलब here I have concluded that n. निकिता, कुछ नहीं है.
5 से डिविजिबल होने वाले क्या है? 5 से डिविजिबल होने 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। ये सारे 5 से डिविजिबल होते हैं, रिमाइंडर 0 देता है, बट लेकिन रिमाइंडर मुझे 2 चाहिए, तो तब इसको 7 करो प्लस 2, इसको 2 करो प्लस, मतलब ये सारे नंबर्स 5x फॉर्मेट में होता है, बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 5। इसको प्लस 2 करो 17, इसको प्लस 2 करो 22, बिकॉज 2 रिमाइंडर चाहिए। यहाँ भी प्लस 2 करो 5x प्लस 2, एज सिंपल एज दैट। नाउ ऐसे n को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आना चाहिए। टेल मी व्हाट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ दैट नंबर? n को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आना चाहिए, जनरल फॉर्मेट ऑफ द नंबर क्या है? एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा हूँ वंशिता, जनरल फॉर्मेट पूछ रहा हूँ। अरे मैं n/7 इज इक्वल टू 3 नहीं बोल रहा हूँ, n को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 बोल रहा हूँ। जैसे कि 10 है, इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आता है, राइट? सो इफ एट ऑल आई हैव टू लुक एट दिस, n को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 3 आना चाहिए। कुल श्रावणी, मतलब n को 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आना है, तो वो नंबर कैसे होना है? 7, 14, 21, 28, 35 एंड सो ऑन, राइट? दीज आर द 7 का टेबल। सो 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है, पर लेकिन रिमाइंडर 3 आना चाहिए। रिमाइंडर 3 आना चाहिए मतलब वो 7 नहीं होना है ना, 10 होना है। 7 प्लस 3 10 होना है। या संजना, ये 17 होना है, राइट? ये 24 होना है, ये 31 होना है, ये 38 होना है। मतलब 7 से डिविजिबल होने वाले कौन से फॉर्मेट में होता है? 7x फॉर्मेट में होता है। 7 into 1, 7 into 2, 7 into 3, 7 into 4, 7 into 5, so on। बट 7 से डिवाइड करने से 3 रिमाइंडर देने वाले 7 into x प्लस 3 फॉर्मेट में होता है। कूल श्रुति, कूल संजना, लतिका, इज दिस क्लियर? मतलब when I'm dividing by 7, 3 रिमाइंडर आना है, मतलब the number must be of the format of 7 into something plus 3। ठीक है, फिर आई होप यू आर एबल टू गेट इट। ओके, सो considering the same thing, now फटाफट tell me, if at all I am dividing a number by 8, मेरा रिमाइंडर 5 आना है, तो मेरा नंबर कौन सी फॉर्मेट में होना है? वेरी गुड गाइस। मेरा नंबर 8x हो तो रिमाइंडर 0 देगा ना 8 से डिवाइड करने से, पर लेकिन मुझे रिमाइंडर 5 चाहिए। सो वंशिता, एग्जाम्पल नहीं चाहिए मुझे, फॉर्मेट चाहिए 8x प्लस 5, राइट? नाउ हियर it will be till 10:30, Manisha. Here in the given question, there is a number which when divided by 32 gives a remainder 3. मतलब my number must be of the format of 32 into x plus 3. ठीक है? And similarly, I am dividing by 80. It must be of the format of, sorry, it's not necessary that it is into 80 into x, 80 into y प्लस 3। मतलब उस नंबर को 80 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, मतलब माय नंबर मस्ट बी ऑफ द फॉर्मेट 80y प्लस 3। एंड सिमिलरली 96 से डिवाइड किया तो 96 इंटू इजेड हो तो रिमाइंडर 0 देगा, बट लेकिन रिमाइंडर 3 देना है, मतलब 96z प्लस 3 होता है आंसर। I mean format, this is the format that my number must be। ठीक है, अभी n कैसे पहचानेंगे, n का जनरल फॉर्मेट कैसे पहचानेंगे? ऐसा होता है when तीनों की जगह सेम रिमाइंडर होता है, that n would be, नो 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 श्रुति,
that n must be of the format of LCM of 32, 80, 96 into some variable plus 3. Okay. No, Saurav, it has been given na 3. वहां से आया रिमाइंडर 3. ठीक है. I hope you understood, guys. If at all I have my question in this format, then my number must be of this format. For example, कोई भी नंबर 6 से भी डिविजिबल होना है, 8 से भी डिविजिबल होना है. कोई भी नंबर 6 से भी डिविजिबल होना है, 8 से भी डिविजिबल होना है. ऐसा एक नंबर बोलो. नंबर 6 से भी डिविजिबल होना है, 8 से भी डिविजिबल होना है. नो आकाश, कैसे कैसे 6 से डिविजिबल होगा 42, राइट? या somebody is telling 24, somebody is telling 48, even 72, right? Even 96. I'm explaining, that's what here. ठीक है. So 6 से भी डिविजिबल होना है, 24 से भी डिविजिबल होना है. मतलब 24, 48, 72, 96. मतलब क्या है? 6 का टेबल में क्या आता है? 6, 12, 18, 24, 30, so on. 8 का क्या आता है? 8, 16, 24, 32, 40, so on. These are all the multiples of 8. Those are all the multiples of 6. 6 से भी डिविजन होना है, 8 से भी डिविजन होना है, मतलब दोनों का मल्टीपल होना है. दोनों का मल्टीपल होना है. दोनों का मल्टीपल पहला वाला कौन सा होता है? 24. पहला वाला कॉमन मल्टीपल होगा 24. कॉमन मल्टीपल पहला वाला 24 होगा. 24 के बाद क्या आता है? 6 8 जा 48, 8 6 जा 48, which is 48. उसके बाद क्या आता है? 72, राइट? मतलब कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है मतलब वो 6 का मल्टीपल है. कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है मतलब वो 8 का मल्टीपल है. दोनों से डिविजिबल है मतलब that number must be of the format of 24 into integer, because this is 24 ones are, 24 twos are, 24 threes are, 24 fours are, and so on. Where did I get this 24 from? That is the least common multiple of 6 and 8. Least common multiple of 6 and 8. Everybody, if you understood this, type Y in the chat box. Right? Here we are trying to find out the LCM part. Yeah, Navya. राइट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, 6 से भी डिविजिबल होना है, 8 से भी डिविजिबल होना है. 6 की मल्टीपल्स में ये सब आता है, 8 की मल्टीपल्स में ये सब आता है. पहला नंबर 24 होता है नाव्या, जो दोनों में से डिविजिबल है. 24 के बाद कौन सी मल्टीपल आता है? 48 आता है. 48 के बाद कौन सी नंबर आता है? 72 आता है. इफ यू कीप ऑन राइटिंग ऑल द मल्टीपल्स. बट लेकिन वो मल्टीपल्स कौन से होते हैं? पहला मल्टीपल का टेबल होता है. 24 वन जा, दिस इज 24 टू जा, दिस इज 24 थ्री जा. अगला वाला कॉमन वाला 96 होता है, विच इज 24 फोर जा. सो बट आई कैन जनरलाइज सेइंग दैट पहला एलसीएम पहचान के, पहला मल्टीपल पहचान के उसका इनटू वेरिएबल किया तो आपको जनरल फॉर्मेट आ जाता है. आपको जनरल फॉर्मेट आ जाता है. नाउ कंसीडरिंग द सेम केस, in this question if I had asked you here a number which is divisible by 6 and 8 कौन से फॉर्मेट में होता है? ठीक है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 and 8 कौन से फॉर्मेट में होता है? सिमिलरली इफ आई हैड आस्क्ड यू नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 and 6, 4 से भी 6 से भी डिविजिबल होना है तो कौन से फॉर्मेट में होता है नंबर? टेल मी द आंसर.
4 से भी 6 से भी डिविजिबल होना है तो नंबर का फॉर्मेट क्या है? शिवा, दोज आर द एग्जांपल्स, बट जनरल फॉर्मेट क्या होता है? इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व, 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, सो ऑन। बट 6 से डिविजिबल होने वाले 6, 12, 18, 24, 30, सो ऑन, राइट? सो कॉमन मल्टीपल्स क्या है? कॉमन मल्टीपल्स क्या है? पहला वाला 12 है, दूसरा वाला 24 है, तीसरा वाला क्या होगा? 36 होगा। If you clearly observe, common multiples are of the format of 12 into x. What is this 12? Basically LCM of 4, 6. Multiples में, common multiples में least common multiple is 12 into x. That is the general format. Sanjana, is that clear? Now एग्जैक्टली डिविजिबल बोला इसलिए वो नंबर क्या बन गया? एलसीएम ऑफ 4, 6 इंटू एक्स। लेकिन 4 या 6 से डिविजिबल डिवाइड करने से रिमाइंडर 2 आना चाहिए, रिमाइंडर 2 आना चाहिए। उस नंबर का जनरल फॉर्मेट क्या होगा? एलसीएम ऑफ 4, 6 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। एलसीएम ऑफ 4, 6, एक्स प्लस 2 होगा, क्योंकि ये तो रिमाइंडर 0 देता है और 2 ऐड किया तो उसका रिमाइंडर 2 आ जाता है। रिमाइंडर 3 आना चाहिए तो वहां जनरल फॉर्मेट में +3 करते हैं। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। नाउ उसी फॉर्मेट में मैं यहाँ एलसीएम आई मीन इन तीनों का एलसीएम करके इनटू वेरिएबल करके +3 किया, क्योंकि यहाँ 3 इज द रिमाइंडर पूछा गया है। अब क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 32, 80, 96 फास्टर? 32, 80, 96 का रिमाइंडर कितना होता है? रिमाइंडर नहीं, एलसीएम। या आकाश? 32, 80, 96 का एलसीएम। So firstly, let's try to do it in the way we know, normal way. I think you all know how to find the LCM using the table method. Table method क्या है? 32, 80, 96. HCF नहीं पूछ रहा हूँ आर्यन, LCM पूछ रहा हूँ। तो तीनों को डिवाइड करने वाले कोई एक नंबर बोल दो। 2 राइट, 2 16 जा, 40 जा, 248 जा। उसके बाद भी 2 कर सकता है, 2 8 जा, 2 20 जा, 2 24 जा। उसके बाद भी 2 कर सकता है, 2 4 जा, 2 10 जा, 2 12 जा। उसके बाद भी 2 कर सकता है, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 6 जा। उसके बाद 2 कर सकता है, तीनों को नहीं कर सकता लेकिन ये दोनों को कर सकता है। क्या करोगे? 2 1 जा, इस 5 का तो 5 ही रखोगे, इस 6 का 2 3 जा जाता है तो 3 रखोगे। अब क्या है? अब ऐसा कोई भी दो नंबर भी नहीं है जहां आप कैंसिल कर सकते हो। सो अभी क्या है? इन सबका मल्टीप्लीकेशन करना है। 1 2 3 4 5, 2 power 5 multiplied by 5 into 3 15, 32 into 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 480, right? This is how you find the LCM. So here you will write 480m plus 3, right?
480m plus 3. Now the question is, a number when divided by 32 gives a remainder 3. A number when divided by 80 gives a remainder 3. A number when divided by 96 gives a remainder 3. So if m is equal to 1, then n is equal to 480 into 1 plus 3. 483 would be my answer. The smallest such number. 480 into 2 भी दे सकते हो, 480 into 3 भी दे सकते हो, तब भी ये satisfy होगा, but smallest number is 483. ठीक है, इसका जनरल फॉर्मेट तो हमको आ गया. हमने m की जगह 1 लिया तो इसलिए 3 आया है. 480 plus 3. Right? But why m is equal to 1? Ashu, question is smallest such number. Smallest कब आता है? जब m smallest होता है. ठीक है, but if you clearly observe, this method of finding the LCM takes a lot of time. This method of finding the LCM takes a lot of time. What you need to understand, I have 32, I have 80, I have 96. When I'm dividing this number by table method, if I take the biggest number that can divide all of this, matlab, if I take the highest common factor to divide all of them, it will become easy. For example, कैसे देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अनिया, this is a special case where only you have to use LCM. ठीक है, आपको HCF यूज करने के लिए सीधा HCF बोलेंगे, या तो there is a question, I mean there will be a condition called minimum in the question. That's when you need to go for HCF. ठीक है, so 32 and 80 का डिफरेंस क्या है? 40 नहीं, सॉरी 48 नहीं, 48 क्या, या 48. एंड 80 एंड 96 का डिफरेंस क्या है? 16. राइट, 16 एंड 48 का HCF क्या है? 16 3 is 48, 0. So 16 is the HCF because that's what we did previously. Now what do we do? 32, 80, 96 को किससे डिवाइड करते? 16 से. 16 2 is 32, 16 5 is 80, 16 6 is 96. मतलब ये तीनों बिना करके सीधा हम यहां तक आ गए, 256 तक. उसके बाद सिर्फ 2 से करो. 2 1 जा 5 बचेगा, 2 3 जा, you will get the same thing again. 16 2 जा 32, 32 5 जा 160, 163 जा 48. If you know the HCF faster, you can divide by that and then find the LCM also faster. Everybody, if you understood this, type Y in the chat box. Okay, ये भी मेरे लिए थोड़ा लॉन्ग मेथड लगता है. मैं इससे भी शॉर्टर करना चाहता हूं सर. मैं ये नहीं करना चाहता हूं, इससे भी शॉर्टर करना चाहता हूं. इससे भी शॉर्टर करना है तो क्या कर सकते हो? अच्छे से देखो, ये थोड़ा आपको टेबल्स अच्छे से आने से हो जाता है. 32 है, 80 है, 96 है. अभी इन तीनों का एलसीएम लेना चाहता हूं. राइट, मैं राइट, जो भी एलसीएम है इन तीनों का मल्टीपल होना चाहिए. मतलब सबसे बड़ा नंबर का भी मल्टीपल होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर का भी मल्टीपल होना चाहिए. मैं क्या करता हूँ, 96 का टेबल लिखता हूँ. 96 1 जा 96. ये 80 से डिविजिबल है क्या? नहीं. सो ये एलसीएम नहीं बन सकता है. 96 का सेकेंड वन विच इज 190,
2। ये 80 से डिविजिबल है क्या? नहीं, 82 जा बट 83 था 240 नहीं। 96 इंटू 3 क्या होता है? 192 को 96 से ऐड करना पड़ेगा, 288 होता है, राइट? इसको 96 ऐड करना पड़ेगा। ये 80 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 96 इंटू 4 क्या होता है? इसको ऐड किया तो 384 होता है, बट लेकिन इससे जाता है क्या 80 से? 84 जा 32, 85 जा 400 नहीं जाता है। बट 96 इंटू 5 क्या होता है? 96 इंटू 5 विल बी 480। वो 80 से जाता है क्या? जाता है। 32 से जाता है क्या? जाता है। 32 वन जा 32, 16 आएगा। 32 इंटू 5 जा 160। सो हमेशा एलसीएम पहचानने के लिए बिगर नंबर का मल्टीपल्स लेके वो बाकी नंबर से डिविजिबल होता है या नहीं होता है देखना पड़ेगा, वो फटाफट करने के लिए। एवरीबॉडी इफ यू अंडरस्टूड दिस टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ 10, 12, 15, इसका एलसीएम करना है तो क्या करोगे? यू टेक द बिगर नंबर, यू टेक द बिगर नंबर विच इज 15। इसका मल्टीपल्स क्या है? 15। 12 से डिवाइड होता है? नहीं। 15 टू द 30, 12 से डिवाइड होता है? नहीं। 15 थ्री द 45, 12 से डिवाइड होता है? नहीं। 15 फोर जा 60, 12 से डिवाइड होता है? 12 फाइव जा 60, यस। 10 से भी होता है? यस। दोनों में होना है तो 60 विल बी द एलसी, राइट? यू टेक द बिगर नंबर, उसका मल्टीपल्स को देख लो बाकी सबसे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, एंड दिस इज हाउ यू फाइंड द एलसीएम फास्टर। ठीक है एवरीबॉडी, इफ यू अंडरस्टूड whatever we have discussed today, type y in the chat box. With this I am done for the day. ठीक है। So the way we are doing the basics of HCF LCM, I'll be taking this basic maths classes every week. There might be some weeks where I might not be available. If at all I'm not doing, don't worry for that week. I'll again do it for the next week, and I'll ensure for every topic, whatever the basics that you need to know in order to understand the things well, I'll be doing it. But you need to ensure you will be present. You will be present for sure. ठीक है? बेसिक मैथ्स क्लासेस में एकदम कॉन्सेप्ट ही पढ़ा दूंगा मैं, सीरियसली पढ़ा दूंगा मैं। जितना शॉर्टकट्स, जितना आसानी चीजें हैं आपको जो पता होना है ऑन द फिंगर टिप्स ऑन द फ्लाई करने के लिए आपको हेल्प होता है, वो सब मैं पढ़ा दूंगा। पर लेकिन आप लोग कंसिस्टेंटली आना चाहिए। ठीक है? हियर I have written this. Anybody who haven't noted, please note them. You need to understand that you need to remember this. सौरव, इसके लिए स्पेसिफिक मैं देता हूँ वैसे, ठीक है? बट आपको नॉर्मल क्वेश्चंस जो भी आप करते हो उसमें भी ये सब यूज करते हो, इसके लिए स्पेसिफिकली नहीं है। वो सब अच्छे से करने के लिए मैं ये सब ये करा रहा हूँ। ठीक है? दिस शीट आई वांट यू ऑल टू, आई मीन दिस नंबर्स आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर एट एनी कॉस्ट। ठीक है? With this I'm done for the day, guys. You can take break. Bye bye. I'll you can ping me personally, okay? I'll send you the notes if you want.